ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ମନ୍ କି ବାତ୍ର 121ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦିଆଗଲା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ୱେବ୍ସରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଭାରତ ପାଭିଲିୟନ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହା ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 121ତମ ସଂସ୍କରଣ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ, ଆକାଶବାଣୀ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାତି 8ଟାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏନ୍ଆଇଏ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ଆକ୍ରମଣସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମର ବୈଶରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମେଳାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आए। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ନବନିଯୁକ୍ତ 51,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसका बड़ा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। ଅହିଂସା ହେଉଛି ଭାରତର ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭାରତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଟିଏ 2025 ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଏନ୍ଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନ୍ଟିଏର ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉଛି neetclaim.centralindia.cloudapp.azure.com।
वेबसाइट आउ थे कहीदेचु वेबसाइट होउची neatclaim.centralindia.cloudapp.azure.com। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी। आसंता मे 1 ରୁ 4 तारिख पर्यंत मुंबईଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା विश्व दृश्य श्राव्य ଓ मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 ପାଇଁ सारा विश्व एकाठी ହୋଇଥିବା बेले भारत गर्वर सह भारत पाभिलियन उन्मोचन करिवो। एथिरे विश्व गणमाध्यम एवं मनोरंजन क्षेत्र में भारतर कहानी संपन्न परंपरा नूतन अध्याय सृष्टि करिवो। कला टू कोड अर्थात कलारू संहिता शीर्षक उन्मोचन होगाकु थिबा भारत मंडपरे वसुधैव कुटुंबकमर भावना नहीं विश्व को एक परिवार एवं भारतर कला परंपरा किभली सृजनशीलता सौहार्द्य एवं सांस्कृतिक कूटनीतिर पथ प्रदर्शक पलटिछि ताहा प्रदर्शन कराजिवो। भारत मंडपम रे 4टी मुख्य विषय वस्तु रहिबो जेउथिरे विश्ववासी भारतीय कहानी और परंपरार निरंतरता संपर्क अवगत होई परिबे। एथिरे श्रुति भागरे वैदिक उच्चारण लोकगाथा शास्त्रीय संगीत रेडियो एवं कथित शब्द उपरे गुरुत्व दियाजिवो। कृति विभाग में लिखित परंपरा उपरे विशेषकरी गुंफागुड़िकर अंकित लेखा तालपत्र पांडुलिपि मुद्रित गणमाध्यम साहित्य और आधुनिक प्रकाशनर विकासधारा प्रदर्शन हेबो। सेहीपरि दृष्टि विभाग में देशर प्राचीन नृत्य परंपरा कंढई कला लोकनाटक सिनेमा टेलीविजन और डिजिटल अभिव्यक्तिर प्रदर्शन कराजिवो। चतुर्थ तथा अंतिम विभाग भावे क्रिएटर्स लिप रे भारत किभली अत्याधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग करी पारंपरिक कहानी गुड़ी प्रदर्शन करुच्ची से संपर्क में तथ्य प्रदान कराजिवो। ए संपर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती कुछ ही दिन बाद मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। मीडिया गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां एंटरटेनमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण नहीं आलोचना करने को आसंताकाली जम्मू काश्मीर विधानसभार स्वतंत्र अधिवेशन बसिबो। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 25 ଜଣ पर्यटक और जड़े स्थानीय बासिंदाଙ୍କ मृत्यु होइतिबा बेले अनेक लोक आहत होइतिले। विधानसभार ଏହି दिनिकिया स्वतंत्र अधिवेशन में मृतकମାନଙ୍କ प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन कराजिबा परे घटना संपर्क में आलोचना कराजिबो। एथिसह विधानसभार आतंकवादी आक्रमण घटना को दृढ़ निंदा कराଯାଇ एक संकल्प पारित कराजिबो। जातीय निरापत्ता को दृष्टि रखी आतंकवादी विरोधी अभियान और सुरक्षा बाहिनी गतिविधिर सीधा प्रसारणरू निवृत्त रहिबाकू गणमाध्यमगुड़िकू सूचना और प्रसारण मंत्रालय परामर्श देइछि। जातीय निरापत्ता को सुरक्षित रखिबारे गणमाध्यम डिजिटल प्लाटफर्म एवं एथिरे जड़ित थिबा अंशीदार मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। संवेदनशील सूचनार सुविधा अजाणତରେ शत्रुपक्ष को सहायता प्रदान करिवार आशंका रहिछि। एहाद्वारा देशर सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी अभियान क्षेत्र में प्रतिबंधक सृष्टि होबार संभावना रहितिबा मंत्रालय कहिछि। दक्षिण इरान साहिर राजाई बंदर निकट में घटिथिबा भयंकर विस्फोरण में मृत्यु संख्या 14 को वृद्धि पाइछि। एथिरे 750 रु अधिक लोक आहत होइतिबा जଣାपड़िछि। राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियान सामाजिक गणमाध्यम पीड़ितों प्रति दुख और संवेदना प्रकाश करने सह घटनार तदंत निर्देश देइछन्ति। नुआदिल्ली स्थित सेना डाक्तरखाना और गवेषणा प्रतिष्ठान में चक्षुरोग विभाग ग्लूकोमा अस्त्रोपचार पर 3D माइक्रोस्कोप प्रचलन करी एक माइल खुंट हासिल करिछि। ଏହି 3D माइक्रोस्कोप डाक्तर मानकु अधिक सफलतार सह जटिल चक्षु अस्त्रोपचार करने दिगरे सहायक हेबो। एथिरे स्वतंत्र 3D ग्लास और 55 इंचर 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले रहिछि। गत 10 वर्ष मध्य देशर 17 कोटी अधिक लोक अत्यधिक दारिद्र्य वर्गर उन्नीत होइछन्ति बोली विश्व बैंकर एक रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। सेतिमध्यरे उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिमबंग और मध्य प्रदेशर 2/3 लोक रहितिबा जଣାपड़िछि। चलित आईपीएल क्रिकेट सीरीजर गत संध्यार वर्षाबाधित मैच जो कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स गोटे लेखाएं पॉइंट हासिल करिसेंति। कोलकातार इडेन गार्डेन्स अनुष्ठित मैच में प्रथम बैटिंग करी पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओभर 4 विकेट विनिमय 201 रन स्कोर करथिला। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स मात्र 1 ओभर 7 रन स्कोर करथिबा बेले वर्षा जोगु खेल संभव होई नथिला। पॉइंट तालिकार पंजाब किंग्स चतुर्थ स्थान में रहिथिबा बेले कोलकाता नाइट राइडर्स सप्तम स्थान में रहिछि।
ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ମନ୍ କି ବାତ୍ର 121ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦିଆଗଲା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। କୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିନେଲେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।